Hello friends, today we are going to discuss the Birch reduction. The reagent for the Birch reduction is generally alkali metal in liquid ammonia, and alkali metal is used is generally lithium, sodium, potassium in liquid ammonia. This is the reagent used in the Birch reduction. Now we move towards the application part of this Birch reduction. So first application first is it reduce the benzene rings. That means it remove the conjugation of benzene ring. It's remove the conjugation of benzene ring. That means it destroy the aromaticity of the benzene ring. Also it reduce the internal alkyne. Two types के alkyne होते हैं, internal और terminal. We will discuss in the with the help of example. Here you can write the it reduce the internal alkyne to transalkene, or we can say that E-alkene. A triple bond is converted into double bond with trans geometry. It also reduces the alpha beta unsaturated carbonyl compound and also it reduces the conjugated alkene. It also reduces the conjugated alkene. So here we discuss the main four application of this Birch reduction. This is the reagent used in the Birch reduction, alkali metal in liquid ammonia, and these are the four application. We will study one by one. So first application is how to remove the conjugation of the benzene ring. So first हम देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है. सपोज कोई भी रिएजेंट है, सपोज ये सोडियम इन लिक्विड एमोनिया हम यूज़ करते हैं, तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन है. सपोज वी नो दैट सोडियम is highly electropositive element. It lose the electron and converted into sodium plus by losing one electron, and this electron is solvated with liquid ammonia and it is converted into this ammoniated liquid, and this ammoniated electron is responsible for all this application. So main role is this ammoniated electron, and we know that this ammoniated electron solution is deep blue in color, and it is paramagnetic in nature. We already known in laboratory, right? Now next is first हम देखते हैं कि how to remove the aromaticity of the benzene ring. काफ़ी हमने रिएक्शन देखी होगी कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, लेकिन ये रिएजेंट का यूज है कि डिस्ट्रॉयड द एरोमेटिसिटी. मीन्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि कोई भी कंपाउंड का एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करना, बट विद द हेल्प ऑफ दिस बर्च रिडक्शन वी कैन रिमूव द कॉन्जुगेशन. मेन रोल है कॉन्जुगेशन रिमूव करने का. सो इफ़ वी रिड्यूस द बेंजीन रिंग, if we reduce the benzene ring in presence of Birch reduction. Birch reduction में यहाँ लिखूँगा Birch reduction कॉमन Br, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो ammoniated इलेक्ट्रॉन है. So it reduce the benzene ring to 1,4 diene. इस तरह से यहाँ रिडक्शन होता है. One of the hydrogen is added here and one of the hydrogen is added here. We can see that here there are in the reactant 6 hydrogen, but here in the product total 8 hydrogen. So number of hydrogen is increases, that means reduction occur. We can also write that
like that. So all these products are same, but both the hydrogen are added opposite to each other, मीन्स 1,4 एडिशन अकर. इस तरह से नेफ्थलीन का भी हम रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्च रिडक्शन. इट ऑल्सो रिड्यूस द नेफ्थलीन and converted into this type of compound. Birch reduction means यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम मेटल in liquid ammonia. Ammonia is in the liquid form. So naphthalene is also reduced like that. Here also hydrogen is added here. इस तरह से ये रिडक्शन करता है बेंजीन का और नेफ्थलीन का. मैकेनिज्म से हम देख लेते हैं कैसे उसकी जो एप्लीकेशन है. मेन जो फर्स्ट जो एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, जनरली यहाँ हमने एक सॉल्वेंट भी यूज़ होता है. जनरली अल्कोहल जो प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं CH3 CH2O. तभी ये कोई भी ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें ये डिजोल्व हो जाएगा, तब रिएक्शन होगा. और उसका भी रोल आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म से. फर्स्ट व्हाट हैपन, दिस एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट इन बर्च रिडक्शन दिस इज a free electron. This free electron is attack here any carbon of the benzene ring. So what happen, this bond is shifted here, and again this bond is shifted here. So what happen in the first step, here one electron, we can put this bond is shifted here and here a negative charge, and this bond remain unchanged. In the second step, we know that we use here the ethanol as a solvent, and ethanol is a protic solvent, and here the negative charge, this negative charge abstract the proton from the here, and we get this type of intermediate. Here hydrogen is added, already one hydrogen is there, another hydrogen is abstracted from the solvent, and this radical again converted into carbanion. Another electron coming from the sodium metal. Here we know that the Birch reduction, the reagent R is sodium in liquid ammonia. So again sodium lose one electron and converted into sodium plus one electron, and this ammoniated electron again this added here. So this radical is converted into again carbanion, and this carbanion again abstract the proton from the solvent ethanol, and it is converted into this type of product. So this is the simple mechanism for the formation of 1,4-diene from benzene. Now we move from the second application. The second application is it reduce the internal alkyne to trans alkane. ये इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो जो इट रिड्यूस द ट्रांस अल्कीन. सिस अल्कीन के लिए हमको पता है कि वो लिंडलर कैटालिस्ट यूज होता है, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट लाइक दैट. सो हाउ इट वर्क हियर, फर्स्ट वी नो दैट द internal alkynes means carbon triple bond carbon, and both the side no free hydrogen are there. Both the sides there is some alkyl group, some substitution are there. So this is the internal alkyne, and we know that its name is methane, ethane, propane, bute-2-ine. If we reduce this in with the help of Birch reduction, sodium solid in liquid ammonia, so it is converted into triple bond is converted into double bond, and this hydrogen is added on transposition. So this methyl group is automatically go on the transposition,
So we get trans but 2-ene as a product. So this is the another application of this Birch reduction. It reduce internal alkyne to trans alkene. अगर हमको यहाँ सिस प्रोडक्ट चाहिए तो हम वी कैन यूज द रिएजेंट लिंडलार कैटालिस्ट, बट दिस रिड्यूस द ओनली ट्रांस प्रोडक्ट. It cannot reduce the internal terminal alkyne. Terminal alkynes means कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके वन साइड हाइड्रोजन होगा और दूसरी साइड कोई भी हम मिथाइल ले सकते हैं. इफ़ वी रिड्यूस in presence of Birch reduction reducing agent sodium solid in liquid ammonia, so what happen, we know that this carbon having a sp hybridization and it has this carbon having a more s character, and we know that any hydrogen atom is attached with more electronegative atom, and so that's why this hydrogen is highly acidic. So it this is abstracted by the base and it converted into this type of salt. Instead of reduce, it is converted into salt form. It make a salt form with NH2 group like that. इस तरह से salt बन जाएगा, but it cannot reduce. So Birch reduction this not reduce the terminal alkyne. हाउ इट इज़, इसका भी एक थोड़ा मैकेनिज्म हम देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है. सपोज हमने यहाँ भी लिया था ये अल्काइन, या कोई भी अल्काइन हम ले सकते हैं, ये ब्यूट टू आइन. फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप ammoniated electron is attacked from the any carbon. So what happened, this bond is shifted here. So what happened here, triple bond is converted into carbon double bond carbon. This one electron is remain here. Here there is a negative charge and this is the another methyl group, and this is the also another methyl group. Now this here we can put that methyl group. This is also a methyl group. You understand all these things. Now this negative ion is abstracted proton from the ammonia. So here this hydrogen is abstracted here and it is converted into like that, this type of structure, hydrogen, methyl, carbon double, one electron is left in this orbital. Now to remove the repulsion between this two methyl group, it is converted into trans form like that, C triple bond C methyl group. Here one electron is there. To remove the repulsion between this two methyl group and methyl and this electron, so it is converted into transposition. So in this less repulsion this compared to this geometry. And the next step is again ammoniated electron is attacked here, is added here. So it is again converted into vinylic carbanion. विनाइलिक कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन था पहले और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन आयन. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अगेन इट इज abstracted proton from the ammonia, here NH2. This hydrogen is abstracted by this carbon ion, so it is converted into this type of trans alkene. So इस तरह से second application, this is the it reduce the internal alkyne to trans-butene as a product. फर्स्ट एप्लीकेशन में अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या रोल है उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. सपोज बेंजीन रिंग हमने वो विदाउट सब्स्टिट्यूटेड देखी थी. अगर उसमें भी कोई डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप है तो इट्स रिड्यूस इन द अनदर वे. पहले हमने एक एप्लीकेशन देखा था जस्ट बेंजीन का, लेकिन सपोज यहाँ कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज में यहाँ
R लिख देता हूँ, और R में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इट में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. Suppose R is equal to electron donating group. So what happen in here, if R is equal to electron withdrawing group, we know that electron donating group is generally alkyl group, OH means और भी halogen है, methoxy group. This all are an electron donating group, NH2, like that. But electron withdrawing group is carboxylic acid, cyanide, nitro group, all carbonyl containing group COCH3, amide group. This all are electron withdrawing group. So what happen in the electron donating group and electron withdrawing group? So, this type of group are present in the benzene ring. The reduction occur, but reduction occur at ortho and meta position. This is the ortho position, this is the meta position, and this is the para position, and this position is also known as ipso position. This is ipso position. So when electron donating group are present, at that time the hydrogen is added at the ortho and meta position. So here generally R is the electron donating group, and the reduction occur at, this is the ortho position of this group, and here this is the meta position of this group. So when electron donating group are present in the benzene ring, then hydrogen is added ortho to the donating group present in the benzene ring, and if electron withdrawing group are present in the benzene ring, then reduction occur at ipso and para position. And we know that this is if this is electron withdrawing group, it withdraw the electrons from the benzene ring. Any of the group are present in this ring, this act as a electron withdrawing group. So what happen, the reduction occur at ipso position and para position. That means hydrogen is added here and here, so double bond remain here. So one hydrogen is added here and one hydrogen is added here. So we can write the we can practice the example. Suppose if we take here some electron withdrawing group COOH. So if we reduce with the help of Birch reduction, so it reduce at the ipso position and para position. Here hydrogen is added. Reduction occur at ipso position and para position. Same way, if electron donating group are present in the benzene ring, then Birch reduction, with the help of Birch reduction, the reduction occur on the ortho position and meta position to the substituent, electron donating substituent. Here hydrogen is, one hydrogen is added here and one hydrogen is added here. So this is the ortho position of this substituent, and this is the ortho meta position of this substituent. सपोज नेफ्थलीन कोई रिंग में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और उसमें देखते हैं कि हियर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इज मोर डोमिनेंट देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बिकॉज रिडक्शन हो रहा है किसी का. तो क्या है कि जस्ट इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी टेंडेंसी कम रहेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की. तो सपोज एक हम दो रिंग लेते हैं, एक रिंग में सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दूसरी रिंग ऐसी है, सपोज उसका बर्च रिडक्शन हम करवाएंगे. सो दिस ग्रुप इज मोर डोमिनेंट ओवर दिस, सो दिस रिड्यूस ओनली दिस रिंग like that, but this ring remain unchanged. इस तरह से सपोज कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोज ये रिंग में. सो व्हाट हैपन, द हेल्प ऑफ बर्च रिडक्शन, this ring is more rich for the electron,
So electron is added here only on this ring. So reduction occur on this ring, and it does not reduce this ring because it has a more methyl group are there, and methyl group is electron donating group. So here reduction only occur on this ring. So दूसरा एक दो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर लेते हैं. If two group are present, one is electron donating and one is electron withdrawing group. सपोज हम यहाँ ले लेते हैं COOH और यहाँ ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप. And if we reduce with the help of burst reduction, so what happen? This is reduced like this way. So here what happen? The way here electron withdrawing is more dominant, so we can more concentrate on the moiety that के जहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहना चाहिए. अब देख लो अभी जहाँ एक आप शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहाँ डबल बॉन्ड आएगा. तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा यहाँ एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और यहाँ एक डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो उसके सामने डबल बॉन्ड रहेगा. और आप मैकेनिज्म से भी देख सकते हो कि यहाँ आप सपोज मैकेनिज्म से देखोगे तो यहाँ कार्बेनाइन स्टेबिलाइज होगा, यहाँ कार्बेनाइन स्टेबिलाइज होगा तो यहाँ मीन्स हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ रिडक्शन होगा. लेकिन यहाँ कार्बेनाइन स्टेबिलाइज नहीं होगा तो मीन्स मैकेनिज्म से आप ड्रॉ कर सकते हो, और डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आप इस तरह से याद रख सकते हो. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल, इफ टू ग्रुप आर प्रेजेंट at ortho and meta position, this is electron donating group and this is electron withdrawing group. If we reduce in presence of Birch reduction, so it is converted into, it reduce like that. Same like if para position, if COOH group and here methyl group are present, and if it reduce with the help of Birch reduction, so it same like it reduce like that. मीन्स आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर डोमिनेंट ओवर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, अब अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर present in the ring, suppose COOH and NO2, and we know that NO2 group is powerful electron withdrawing. So in this two group both are electron withdrawing, but NO2 is powerful electron withdrawing group, so NO2 is more dominant over COOH. So we reduce this moiety with the in the comparison with NO2 group. So here reduction occur like that. Now third application is it reduce the alpha beta unsaturated carbonyl group. This is the carbonyl group, this is the alpha carbon, this is the beta carbon. If we reduce with the help of Birch reduction, it remove the this double bond. That means alpha beta unsaturated ketone is converted into this saturated ketone. इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज ये if we reduce with the help of Birch reduction, what happen? Double bond is completely removed. It does not affect the carbonyl group. And last application is it remove the conjugation. Suppose this type of alkene are there, and if we reduce the with the help of Birch reduction, what happen? This type of alkene is formed. That means it remove the conjugation. नेक्स्ट भी और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. सपोज ये आगे में एक ही एग्जांपल प्रैक्टिस किया था. ये सपोज ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हम कोई भी ले सकते हैं कार्बन CH2 CH3, यहाँ भी ले सकते हैं CH2 CH3. If we reduce with the help of Birch reduction, triple bond is converted into double bond,
एंड दिस दोनों इथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे चले जाएगी, ट्रांस पोजीशन पे, CH2CH3, here CH2CH3 एंड वो हाइड्रोजन इज एडेड हियर। तो इस तरह से हमको ये ई अल्कीन बनता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, X3N trans X3N, and this is the structure of methane, ethane, propane, butane, pentane, X3I. So hope you understand the application part of this birch reduction. Thank you very much.